Today we are going to discuss about the second law, that is Charles law. Charles law. These gas laws are followed by the ideal gases. This Charles law gives us a temperature volume relationship. Temperature volume relationship. Charles and Gay-Lussac work independently on a influence of temperature, effect of temperature on volume of gas. किसने किसने वर्क किया है? चार्ल्स एंड गे-लुसैक के दोनों ने वर्क किया है इंडिपेंडेंटली. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस. उनको ये पता चला कि फॉर इंक्रीज ऑफ एवरी डिग्री ऑफ टेम्परेचर, फॉर increase of every degree of temperature, volume of gas increases by 1/273.15 of its original volume. At 0 degrees Celsius. This expression can be mathematically expressed as is equal to V0 plus T upon 273.15 into V0. ये एक्सप्रेशन इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये वाला दिस इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस लाइक दिस. इसमें वी टी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. अगर ये इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, तो हमको मिलता है वी टी इज इक्वल टू V0 1 प्लस T अपॉन 273.15. ठीक है. Therefore VT is equal to V0 T plus 273 डिवाइडेड बाय. ठीक है. इस तरह से हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं. एट दिस स्टेज a new scale of temperature was introduced. This is called absolute temperature scale. Absolute temperature scale. Or this absolute temperature scale is defined as Tk is equal to Tc plus 273.15. ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड thermodynamic scale of temperature. Thermodynamic scale of temperature. इसका यूनिट होता है K.
in the respect of Lord Kelvin. In the respect of Lord Kelvin, this is उसने डिटरमाइन किया था द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो. एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस in 1854. Now, above equation can be rewritten by replacing the Celsius temperature by absolute temperature, by replacing Celsius temperature to absolute temperature. Vt is equal to V0 plus Tt upon T0, where T is equal to 273.15 and T0 is equal to, वहाँ पे T क्या है, T plus 273.15 and T0 क्या है 273.15. अब इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो हमको मिलता है Vt अपॉन Tt इज इक्वल टू V0 अपॉन T0. उसमें से अपन एक जनरल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू V बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और V इज इक्वल टू K इंटू T. ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ. दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम द चार्ल्स लॉ. इसको हम लोग कैसे स्टेट कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of fixed mass of gas, volume of fixed mass of a gas is directly proportional to its temperature, in Kelvin. This law illustrated diagrammatically. This law can be illustrated diagrammatically as जैसे हमारा ये, ठीक है. अब हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया वॉल्यूम और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस. ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. एट प्रेशर P1 दिस ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, एंड एट प्रेशर P2 दिस ग्राफ इज ऑब्टेन्ड. अगर हम इसको यहाँ पे एक्सट्रापोलेट करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं, यहाँ इसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं तो ठीक है. तो दिस इज द 0 केल्विन, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस. और ये वाला मतलब क्या, 273.15 केल्विन. इस तरह से जो स्केल है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर, ग्राफ ऑफ वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर. और हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम
of a gas at given constant pressure, that is at P1, plotted versus its temperature in Celsius, degree Celsius, temperature in degree Celsius. It is straight line with positive slope. It is straight line with positive slope. On extending the line, the line intercepts the temperature axis. Intercepts on y-axis. Intercept on y-axis. X-axis is at minus 273.15 joules. At any other value of pressure, P2, a different straight line for the volume temperature plot is obtained, but we get the same zero value temperature. At P2 also, we get the same line, same zero. We get same zero. ठीक है. ऐसे कांस्टेंट प्रेशर पे जो ये करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ निकालते हैं उसको बोलते हैं आइसोबार. अ ज़ीरो वॉल्यूम फॉर अ गैस सैंपल इज हाइपोथेटिकल स्टेट, है ना. ज़ीरो वॉल्यूम फॉर गैस सैंपल is hypothetical state. ठीक है. In practice, all gases gets liquefied at a temperature higher than minus 273.15 डिग्री सेल्सियस से हायर पे गैसेस क्या होती है, गैसेस गेट्स लिक्विफाइड. इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर गैसेस लिक्विफाई हो जाती है. दिस इज़ द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर and it is the absolute zero temperature on Kelvin scale. It is the absolute hypothetical value. Hypothetical value. Isobar से मतलब क्या? A graph of volume versus absolute temperature at constant pressure. It is called as the isobar. In short, Charles law states us that the at constant pressure, gases expand on heating. Gas expand on heating and control on heating and contract and cooling. It gets contracted. ठीक है. The hot air is less denser than cold air. हमको ये बता रहा है कि hot air is less denser than cold air. ठीक है. अब आते हैं अपन प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप. प्रेशर टेम्परेचर relationship. Pressure temperature relationship, that is Gay-Lussac law. Gay-Lussac law. ये क्या बोलता है हमको? At constant volume, pressure of fixed amount of gas, is directly proportional to its absolute temperature.
absolute temperature. Pressure is directly proportional to absolute temperature, that is P is equal to K into T. This is the mathematical expression for the pressure temperature relationship. Now we can solve some problem. At 300 Kelvin, a certain mass of a gas occupy 10 raised to power minus 4 decimeter cube volume. Calculate its volume at 450 Kelvin at same pressure. Calculate its volume. ठीक है, अब देखते हैं अपन टेम्परेचर कितना है यहाँ पे. T इज इक्वल टू 300 केल्विन. V1 is equal to 10 raised to power minus 4 decimeter cube. T2 is equal to 450 Kelvin. V2 क्या होगा? According to Charles' law, V1 by T1 is equal to V2 by T2. Therefore, V2 is equal to V1 into T2 divided by T1. If we substitute the values, 450 into 10 raised to power minus 4 divided by 300, that is equal to 1.5 into 10 raised to minus 4 decimeter cube.